बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ। Welcome to Storyland and very warm welcome to all of my new subscribers and thank you for your support. अगर आप मेरी वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बेल बटन को हिट करने से मिलेगा, लेकिन मेरी पुरानी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को विज़िट करें। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 5 थर्ड एडिशन के सेकंड चैप्टर द वर्ल्ड इन अ वॉल की एक्सरसाइज। हमारे एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट है कॉम्प्रिहेंशन पोस्ट रीडिंग एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Question A is, where does Gerald hunt for animals and why is it a good place to find them? The answer of question A is, Gerald hunts for animals in an ancient crumbling wall that surrounds his garden. It is a good place to find animals because many different creatures live in the cracks of the wall and under the bulges of the old plaster. Our next question is question B. Make two lists of animals under the following headings. Number 1, animals that Gerald find during the day. And number 2, animals that Gerald find at night. The answer of this question is number 1. In the day, hunting wasps, caterpillars, spiders, flies, dragonflies, wall lizards. And the second part is at night, toads, geckos, crane flies, moths. The next question is question C. Explain who the following characters are and find information about what happens to them in the text. The first is Larry and second is Roger. The answer of this question also consists of two parts. Number 1, Larry, Gerald's older brother. He talks a lot. He is an adult. He smokes and thinks the matchbox that Gerald has used is one full of matches. He flings his arm out when he sees the scorpion. He does not share Gerald's love of animals. The shock of the incident makes him scared of matchboxes. The second part of this question is Roger, a pet dog. Gerald likes him and feeds him at mealtimes, even though he is not supposed to. He barks wildly when the incident happens. Gerald takes him on walks. He is a companion to Gerald. The next question is question D. What does Gerald think the female scorpion is wearing? Gerald ने क्या सोचा था कि फीमेल स्कॉर्पियन ने क्या पहना हुआ है? What gives her the appearance? और किसकी वजह से वो ऐसी नज़र आ रही थी? The answer of question D is, Gerald thinks the female scorpion is wearing a pale fawn brown fur coat. उसने सोचा था कि स्कॉर्पियन ने ब्राउन कलर का फर कोट पहना हुआ है. All her babies are clinging to her back, which is what creates the impressions that she is wearing a fur coat. उसके सभी बच्चे उसकी कमर के ऊपर चिपके हुए थे, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था जैसे उसने फर से बना हुआ एक कोट पहन रखा है. The next question is question E. Why does Gerald forget about the scorpions? Gerald scorpions के बारे में भूल क्यों गया था? After he has put them in the matchbox, जब उसने उनको माचिस की डिब्बिया में बंद कर दिया था. The answer of question E is, Gerald forgets about the scorpions. Gerald scorpions के बारे में भूल गया था because क्योंकि he gets busy, वो मसरूफ़ हो गया था with feeding his dog's lunch, अपने कुत्ते को खाना खिलाने में. The next question is question F. What happens to Gerald's mother during the chaos at the end of lunch? खाना खाने के बाद जो भी हंगामा हुआ उसमें जेरल्ड की अम्मी के साथ क्या हुआ? The answer of question F is, Gerald's mother is soaked by water after Margot tries to throw it at the scorpions and misses. जब मार्गो ने स्कॉर्पियन के ऊपर पानी फेंकने की कोशिश की तो वो गलती से अम्मी पे गिर गया और वो पानी से भीग गई. Gerald's mother is so shocked that she is left gasping
and unable to speak. उसकी अम्मी इतनी शॉक्ड हो गई थी कि वो हाँफने लगी और बात करने के काबिल भी ना रही. Next question is question G. Why does Gerald stay away from the family in the afternoon? Gerald अपनी फैमिली से दोपहर के वक्त अलग क्यों रहा? The answer of this question is Gerald stays away from the family in the afternoon because he knows they blame him for the incident that happened earlier at lunch and want to keep out of their way. दोपहर में वो अपने ख़ानदान से दूर रहा क्योंकि वो जानता था कि इस वाक़ये का इल्ज़ाम उस पर लगाया जाएगा जो दिन के खाने के वक्त हुआ. इसी वजह से वो उनसे दूर हो गया. The next question is H. What are the repercussions of the incident? यानी इस वाक़ये के बाद के नताइज बयान करें. The answer is the repercussions of the incident are that Larry develops a phobia of matchboxes and his mother decides to stop Gerald from exploring the animal world by getting him a tutor. यानी इस वाक़ये के नताइज कुछ ऐसे बरामद हुए कि लैरी ने माचिस की डिबिया से डरना शुरू कर दिया और जेरल्ड की अम्मी ने उसको एनिमल वर्ल्ड को यानी जानवरों की दुनिया को एक्सप्लोर करने से रोक दिया, उसके लिए एक ट्यूटर का बंदोबस्त करके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन आई. व्हाई डू यू थिंक दैट दिस चैप्टर इज़ कॉल्ड द वर्ल्ड इन अ वॉल? आप क्या समझते हैं इस चैप्टर को वर्ल्ड इन अ वॉल क्यों कहा जाता है? The answer of this question is the chapter is called The World in a Wall because Durrell describes a whole world of animal life which lives in it. There are many different creatures coexisting in it. इस सबक के राइटर यानी ड्यूरल ने बहुत से जानवरों को एक दीवार के अंदर इकट्ठे रहते हुए बताया है, इसलिए इसका नाम द वर्ल्ड इन अ वॉल है. The next question is question J. Work with others. दूसरों के साथ मिलकर काम करें to fill the Venn diagram below. नीचे जो Venn diagram दी गई है इसको fill करने के लिए with the names of the creatures mentioned in the story. और इसमें आपने उन जानवरों का नाम लिखना है जिनका कहानी में जिक्र किया गया है. तो इसके लिए हम जो सर्कल प्रे के लिए बनाया गया है उसमें हम क्रेन फ्लाइज, मोथ्स, बीटल्स, कैटरपिलर्स और फ्लाइज का नाम ऐड करेंगे. प्रेडिटर्स में हमारे पास लिजर्ड्स आ जाते हैं और बोथ में हम स्पाइडर्स, टोड्स, गीकोस, हंटिंग, वास्प्स, ड्रैगन फ्लाइज इन सब के नाम ऐड करेंगे, यानी ये प्रेज भी हैं और प्रेडिटर्स भी. एंड द नेक्स्ट इज चैलेंज. Pick out 3 of Gerald's descriptive phrases about scorpions. How does he feel about scorpions? हमें बताना है कि जेरल्ड ने कोई 3 ऐसी बातें जो स्कॉर्पियंस के बारे में कही हों, इससे पता चलता हो कि वो स्कॉर्पियंस के बारे में कैसा महसूस करता है. The answer of this question or challenge is Gerald likes scorpions. He knows they can be dangerous, but he is fascinated by them and sympathetic towards them. Number 1. But my favorites were the shyest members of the wall community. Number 2. I was enraptured by this family. Oh no, don't hurt them. इन तीनों सेंटेंसेस से हम गेस कर सकते हैं कि वो स्कॉर्पियंस के बारे में कैसा फील करता था. The question number 2 is answer the following questions with reference to the context. I completely forgot about my exciting new captures. यानी यहाँ पर जो एक सेंटेंस आपको गिवन है आपने 4 क्वेश्चंस के आंसर इसी के अकॉर्डिंग फिल करने हैं. द क्वेश्चन ए इज़ हु फॉरगॉट एंड व्हाट डिस्ट्रैक्टेड हिम. इसका आंसर है जेरल्ड फॉरगॉट बिकॉज लंच डिस्ट्रैक्टेड हिम. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन बी. व्हाई डिड ही कैप्चर द क्रिएचर्स. इस क्वेश्चन का आंसर है He captured the creatures because he was enraptured by them and because he wanted to see the young scorpions grow up. The question C is, where were the captured creatures? The answer of question C is, the captured creatures were in a matchbox. And the last question is question D. What happens next? यानी इसके बाद क्या हुआ था? The answer of question D is Larry thinks that the matchbox is full of matches. He opens it while talking, and the scorpion climbs out onto his hand. He gets a big shock and flings the scorpion onto the table,
which makes everyone panic and things become chaotic. The B point of exercise is working with words. Question 1 is use the following words in sentences of your own to show that you understand what they mean. You will find the words in the story. गिवन वर्ड्स को आपने अपने सेंटेंसेस में इस तरह से यूज़ करना है जिससे ये बात पता चले कि आपको इनका मतलब समझ आ चुका है. ये वर्ड्स आपको सभी इस चैप्टर के अंदर मिल जाएंगे. लेट्स स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस ऑफ दीज वर्ड्स. A is bulging, B is reluctantly, C is enraptured, D is surreptitiously, E oblivious, F inhabitants, G dawdling, H confetti, and I is repeated word, it's again oblivious. Her pockets were bulging with presents, यानी उसके जो पॉकेट्स थे वो गिफ्ट से भरे हुए थे जिसकी वजह से वो बाहर को निकले हुए थे. We have reluctantly agreed to let him go. हमने हिचकिचाते हुए उसको जाने की इजाज़त दी. We were enraptured by the view of the mountains. पहाड़ का खूबसूरत नज़ारा देखकर हम खो गए. John surreptitiously had a look in the answer book. जॉन ने चुपके से जवाब वाली कॉपी में झांका. She was oblivious to our warnings. वो हमारी तंबीहात से बेखबर थी. The city was deserted by its inhabitants. शहर को उसके रिहायशियों ने तबाह कर दिया था. Stop dawdling and hurry up, we are late. खेलना बंद करो और जल्दी आओ, हमें देर हो रही है. The winning team was showered with confetti. जीतने वाली टीम के ऊपर रंग बिरंगी पत्तियों की बारिश की गई. The next part is collective nouns. Question number 2. Here are some common collective nouns. Can you match them correctly and write them in your notebook? For example, a swarm of bees. The answer of question number 2 is a flock of sheep, a range of hills, a litter of puppies, a colony of ants, a school of fish, a heap of stones, a deck of cards, a flock of sheep, a bunch of keys, a herd of cows, a pack of wolves, a pack of hounds. इसको आप अपनी बुक में मैच भी कर सकते हैं और इसके अलावा अपनी नोटबुक के अंदर भी राइट कर सकते हैं. The next question is question number 3. Put the following nouns under the correct headings. इन नाउन्स को अपने करेक्ट हेडिंग्स के नीचे लिखना है. 2 हेडिंग्स आप देंगे इसकी, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, और इनको आप सेपरेट कर लेंगे जो गिवन नेम्स है. गिवन वर्ड्स है हमारे पास रिवर, इंडस, पीपल, जेफ, प्लेसेस, पाकिस्तान, माउंटेन एंड K2. एंड द सेकंड पार्ट इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन. इसमें हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की हेडिंग देनी है. और हमारे पास गिवन वर्ड्स है रेन, स्नो, वाटर, सैंड, राइस, स्टोन्स, टीथ, फर, पेन्स एंड जैकेट्स. द आंसर इज कॉमन नाउन्स में हमारे पास आ जाएंगे रिवर, पीपल, प्लेसेस एंड माउंटेन. द नेक्स्ट हेडिंग इज प्रॉपर नाउन्स. प्रॉपर नाउन्स आर इंडस, जेफ, Pakistan and K2. The third heading is countable nouns. The countable nouns are teeth, pens and jackets. Our fourth and last heading is uncountable nouns. These are rain, snow, water, sand, rice, stones and fur. The next section of exercise is section C, learning about language, grammar, parts of speech. The 8 parts of speech are nouns, pronouns, adjectives, verbs, adverbs, prepositions, conjunctions, and interjections. Question 1 is recall the first 7 parts of speech. यानी फर्स्ट 7 पार्ट्स जो है स्पीच के उसको आप रिकॉल करें. ट्राई टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच, और एक से एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करें. इन योर नोटबुक कलेक्ट मोर एग्जाम्पल्स. अपनी कॉपी में ज़्यादा एग्जाम्पल्स को इकट्ठा करें. राइट डाउन सेंटेंसेज यू सी एंड लेबल द पार्ट्स ऑफ स्पीच. आपको जो भी सेंटेंसेस नज़र आते हैं उसमें आप उन पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेबल करें. एज यू वर्क थ्रू द नेक्स्ट 5 यूनिट्स इन दिस बुक. जैसे जैसे आप नेक्स्ट 5 चैप्टर्स को इस बुक के रीड करेंगे, कॉपी 1 सेंटेंस इनटू योर नोटबुक. वहाँ से एक एक सेंटेंस को अपनी नोटबुक में कॉपी करें एंड प्रैक्टिस लेबलिंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इट. और उसमें दिए गए पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेबल करें.
तो चलिए हम फर्स्ट 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिकॉल करते हैं और इसकी एक एग्जांपल देते हैं। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नाउन्स, और नाउन्स के एग्जांपल हैं बेड, ट्रेन, सैंडविच, ट्री। प्रोनाउंस के एग्जांपल्स हैं यू, मी, हिम एंड दे। एडजेक्टिव्स के एग्जांपल्स हैं बिग, अट्रैक्टिव, टाइनी, स्टिफ, फ्लफी। वर्ब think, sleep, went, showed, plays. The examples of adverbs are quietly, loudly, sweetly, shakily. The prepositions are to, in, on, behind, in front of. Conjunctions are and, but, though, or, because. And interjections are what, hey, wow, yummy. The second question is make lists of the nouns, pronouns and adjectives in the following passage. यानी जो पैसेज आपको दिया गया है इसमें से आपने कलेक्ट करना है, लिस्ट बनानी है नाउन्स की, प्रोनाउंस की और एडजेक्टिव्स की। रीड करते हैं इस पैसेज को। One day Merlin the wizard came out of the deep green valleys of Wales and passed along the stone way to London. He was a famous man and no one dared to attack him on the way. When he got to London, he spoke to the bishops, and they called a meeting in the great Abbey church. Suddenly, everyone in the church started to murmur, because there appeared outside the church a great stone. On the stone was an anvil, and in the anvil was a shining sword. The nouns in this passage are day, Merlin, wizard, valleys, Wales, Stoneway, London, man, way, London, bishops, meeting, abbey, church, 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 stone, stone, anvil, anvil, and sword. The pronouns are he, one person, him, he, they, everyone, and adjectives are one, deep, green, famous, great, great, and shining. The next is verbs and adverbs. Question number 3 is find 6 interesting verbs and 6 interesting adverbs in the story. स्टोरी में आपने verbs और adverbs find करने हैं 6 and change one of the adverbs into adjectives. For example, beautifully to beautiful. The answer of this question is verbs are search, hunt, listen, argue, escape, and scream. And the adverbs are promptly, desperately, thoroughly, carefully, completely, and gently. Now we are going to change the adverbs into adjectives. Promptly, prompt, desperately, desperate, thoroughly, thorough, carefully, careful, completely, complete, gently, gentle. Next is interjections and prepositions. Interjections are words which show strong feelings and emotions such as happiness, sadness or wonder, etc. यानी ऐसे वर्ड जो हम बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स की सूरत में यूज़ करते हैं, लाइक सैडनेस, खुशी के मौके पर, गम के मौके पर, या बहुत हैरान होते हुए. Prepositions are used to show time, position, movement और direction. और preposition हमें इन 4 चीज़ों के बारे में बताते हैं, यानी वक्त, जगह, हरकत और सिमत के बारे में. Question 4 is underline the interjections in the following. आपको 4 sentences given है और इसमें आपने interjections को underline करना है. A. Well, that was a good run. B. We have lost the battle, alas. C. Oh, what a smelly drain. And D. Hurrah, we have won the match. इन 4 sentences में जो interjections हमें given है वो है A. Will, B. Alas, C. Oh, and the last is D. Hurrah. The next question is question 5. Use the following preposition in sentences of your own. यानी आपको जो given prepositions है इनसे आपने sentences बनाने हैं. The sentences are across. He got across the river. Above. He raised his arms above his head. Under. I found my keys under the sofa. Through. I can't breathe through my nose. Outside. Tom noticed a dark blue car parked outside. Near. The best fish swim near the bottom.
during. He got sick during the trip. The next part of exercise is D, listening and speaking. Question 1 is work in a pair and take turns to ask each other some of the following questions. अपने अपने फ्रेंड्स या फेलोज के साथ मिलकर ये क्वेश्चन एक दूसरे से पूछते हैं. आंसर ईच अदर इन डिटेल, और एक दूसरे को डिटेल से आंसर करना है. लिसन टू योर क्लासमेट्स आंसर केयरफुली, और अपने क्लासमेट्स के आंसर को आपने बहुत मोहतात होकर सुनना है. यू कैन हेल्प योर क्लासमेट्स गिव डिटेल्स बाय आस्किंग देम अबाउट देयर रिस्पॉन्स. The questions are A. Name the animal you are most like and why. B. Which animal are you frightened of? C. What should we do to save endangered species? D. Are there any animals that we should try to kill? Why or why not? Question E. Which three animals traits would you most like to have and why? F. What is the sweetest animal you can think of? G. Except for food, do humans need other animals? Why or why not? The last question is give reasons why people have pets. The answers of these questions are A. Lion, because I am brave. B. Spiders. C. Volunteer your time to protect the wildlife in your area. D. We should not kill animals because killing an animal harms the animal. E. Number 1, not being scared of the dark. Number 2, quick like a fox. And number 3, swim in water like fish. F, cat. G, yes, we need animals for transportation, fiber, leather products. Wild animals including birds, fish, insects, and pollinators support the web of activity in a functioning ecosystem. H. They can increase opportunities to exercise, get outside, and socialize. Regular walking or playing with pets can decrease blood pressure and cholesterol levels. The next part of exercise is E. Composition. Imagine that you were present in the dining room during the scorpion incident. Write a paragraph about what you thought and felt about the incident. Think about how you felt during the incident, how you felt about Gerald's interests in animal, what should happen to Gerald? Or pick out the descriptions of the scorpions from the story. Add to that description and write a paragraph about scorpions. Draw a picture to go with it. इन दोनों गिवन सिनेरियोज में से आपने किसी एक को सिलेक्ट करना है और उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है. मैंने दोनों पे सेपरेट पैराग्राफ राइट किया है. चलिए उसको देखते हैं. The first paragraph is Gerald was in a hurry, so he put the matchbox on the table. It was just bad luck for his brother, not a planned prank. Gerald was feeling sorry for everyone. He should not be punished that way. And the second paragraph is about scorpions. Scorpions are arthropods. They have 8 legs and a tail with a venom-injecting barb. Scorpions have 2 venom glands that produce venom used in hunting and self-defense. Scorpions do not have bones. Instead, they have an exoskeleton made of chitin, which is similar to the shell of a shrimp. The next part of exercise is about project, making a presentation. Do some research about 1 or 2 of these dangerous animals. जी आपको काफ़ी सारे एनिमल्स के नाम दिए गए हैं जिनमें है बॉक्स जेलीफिश, गोल्डन पॉइजन डार्ट फ्रॉग, फनल वेब स्पाइडर, ब्लैक माम्बा, हिपोपोटामस, कैसुअरी एंड मॉस्कीटो. किसी एक या 2 को चूज़ करना है और उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देनी है. प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन कवरिंग द पॉइंट्स गिवन बिलो. और नीचे जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं उस प्रेजेंटेशन में ये पॉइंट्स ऑलमोस्ट कवर होने चाहिए. इसको रीड कर लेते हैं. व्हाट मेक्स इट डेंजरस टू ह्यूमन. What it looks like, limbs, horns, tail, claws, color size, body covering, skin, fur. Whether it has a backbone and skeleton or something else. Whether its young are born or hatched from eggs. What its mouth is like. What it eats. Is it a carnivore, herbivore or omnivore? And anything else you can find out. मैंने इनमें से 2 एनिमल्स को चूज़ किया है. One is black mamba and second is golden poison dart frog. The first one is black mamba. The fatality rate from a black mamba bite is 100%. The black mamba is a species of highly venomous snake. Brown snake eagles have verified predators of adult black mambas.
Mambas are also able to swim. Despite its name, the snake is not black. Instead, it ranges in color from gray to dark brown with a lighter underside. It lays 6 to 20 eggs. The black mamba is generally shy and nervous, and it will use its incredible speed to escape threats. The second is the golden poison frog. The golden poison frog contains enough poison to kill 10 people. It is probably the most poisonous animal on earth. It is so toxic that even touching it can be dangerous. The only natural predator is the fire-bellied snake. They eat flies, ants, beetles, spiders, mites, and caterpillars. Tadpoles eat algae and microscopic plants and even smaller tadpoles. These frogs lay their eggs on the ground, hidden beneath leaf litter. This was the end of this lecture. Thank you for watching. And if you want to learn more, please like and share my videos and subscribe my channel. If you have any query, comment, or suggestion related to my content and my niche, you can freely tell me in the comment box below. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.